Hello everyone, I am Nandita Nangia and I welcome you all to our YouTube channel casansaar. Last time we had discussed about the list of audit firm auditors who had not filed the mandatory form NFRA 2. So guys, after which we received many messages and mails regarding applicability of NFRA. So today we are going to discuss about the same, and for that I heartily welcome CAIP Vivek Khurana. First of all, sir, many thanks to giving your valuable time to us. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all to please subscribe our channel and please press the bell icon so that you will be notified for our new videos and webinars. So now it's over to Vivek sir. Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome, and the team CA Sansar for giving me opportunity once again on your platform. And you have rightly said, after that video, I have also received many messages, many calls regarding the applicability of NFRA 2 form. Whether it's applicable on the auditors of the private limited companies, whether it's applicable of the proprietorship of audit firm or the partnership of audit firm. So today we will discuss in large about the applicability of NFRA 2 forms, means who have to file the NFRA 2 form. So let me show through the PPT. So regarding the applicability of NFRA 2 forms. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed the views of the ICI, CSNSR, or any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the legal opinion or the professional advice or the professional opinion. The purpose of this video is to just spread the knowledge, awareness, information, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my also request to all of you, please check the relevant section of Companies Act, any notification, amendments, and the NFRA law and NFRA rules. So regarding the NFRA, National Financial Reporting Authority, we are not going to discuss about the NFRA. Today we are going to discuss about the applicability of the NFRA 2 form. So in section 132, subsection 2 of the Companies Act provides the detail regarding the NFRA, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. The NFRA shall, means what NFRA can do, make the recommendation to the central government on the formulation and laying down of accounting and auditing policy standard for adoption by companies or class of companies or their auditors, as case may be, monitor and influence the compliance. So these are some powers of the NFRA under section 132 subsection 2. So we are not going to discuss. And then regarding the NFRA rules 2018, this is very important. So central government has made NFRA rules 2018, National Financial Reporting Authorities rules 2018, and after that time to time it's amended. And will today discuss not about the old NFRA rules but the relevant NFRA rules which are related to NFRA 2 forms. So these three rules are which are very important and which are relevant for the NFRA 2 form. First is Rule 3 of the NFRA Rules 2018, which is regarding the class of companies and the body corporate. And then Rule 5 is annual return. And then Rule 13 is regarding the punishment in case of non-compliance. So one by one, let's discuss. So first is Rule 5, annual return. So it's mentioned in Rule 5 of the NFRA Rules 2008, every auditor referred to in Rule 3 shall file a return with the authority on or before 30th November every year in form NFRA 2. So as an auditor, if you are referred in Rule 3, तो Rule 3 में कौन कौन सी auditor है, that we will check. तो and that it's the duty of that auditor to file annual return to the authority. Authority means NFRA. तो NFRA के पास every year, ये नहीं कि एक बार आपको सिर्फ सबमिट करनी है, every year you have to submit NFRA 2 form. Annual return is NFRA 2 form. तो रूल 3 में कौन कौन से ऑडिटर्स हैं, विच कंपनीज आर कवर्ड, तो वो हम देखते हैं. रूल 3 से पहले कि विच कैटेगरीज ऑफ ऑडिटर विच आई टोल्ड यू अर्लियर कि किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर इट्स इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, फर्म्स. सो इन रूल
5 and section 132, it talks about the categories of auditors कि किस किस categories of auditor है. Either if you are individual कि आपकी sole proprietorship या proprietorship firm है, or if as auditor, or firm partnership firm as an auditor, or LLP है, then also it's applicable for an LLP है, then also it's applicable. Now, means for if you are into any category of these auditors कि either आप CA की जो practice है आप कर रहे हो as an individual या फिर partnership firm या LLP के through, then it's your duty if you are into the rule 3 to file the NFRA 2 form. Then it's the NFRA rule 3, which class of companies and body corporates. So rule 3, it talks about rule 3, the authority shall power to monitor and enforce compliance with accounting standard and auditing standard, oversee the quality of services under subsection 2 of section 132, or undertake investigation under subsection 4 of such section of the auditors of the following class of company and body corporate. तो कौन कौन से क्लास ऑफ कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स है वो हम अभी डिस्कस करते हैं. तो इफ यू आर द ऑडिटर, if you are the auditor of these class of companies or the body corporate, then you have to file the NFRA 2 form. First, companies whose securities are listed on any stock exchange in India or outside India. सिर्फ इंडिया नहीं है, outside India भी है. Then also means you can say that listed companies. If you are the auditor of listed company, then you have to file the annual return in form 2 up to every year on 30th November. Then B is unlisted public companies. रिमेंबर अनलिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड. सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में भी उसमें भी कंडीशन है. फर्स्ट, इफ पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीस, मींस अगर पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपीस एंड अबोव है, देन यू हैव टू फाइल द NFRA 2 फॉर्म्स. और एनुअल टर्नओवर नॉट लेस देन रुपीस 1000 करोड़ रुपीस. और ये तो और है, कंबाइंड नहीं है कि पेड अप कैपिटल अगर आपकी 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 रुपीस करोड़ उससे ज्यादा है, और एग्रीगेट, ये एग्रीगेट है, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ नॉट लेस देन रुपीस 500 रुपीस करोड़. तो 500 करोड़ एंड अबोव है, ये कंबाइंड आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स. देन आल्सो यू हैव टू फाइल एनुअल रिटर्न इन NFRA फॉर्म 2. एंड ये कब चेक करना है आपने? एज ऑन 31st March ऑफ द इमीडिएट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. सो इफ यू आर साइनिंग द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022, अगर आप 31st March 2022 की बैलेंस शीट चेक कर रहे हो तो आपको प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का चेक करना है. उसको प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का चेक करना है कि उसमें पेड अप कैपिटल कितनी थी, एनुअल टर्नओवर कितनी थी, या फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स इन टुगेदर. सो अगर वो इससे ज्यादा है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 500 मोर, तो यू हैव टू फाइल NFRA 2 फॉर्म्स. एंड देन सी, if it's an insurance company, you are the auditor of insurance company. If you are the auditor of banking company, if companies engaged in generation or supply of electricity, then also you have to file. And fourth, companies governed by any special act for the timing force. And the next, body corporate incorporated by an act in accordance with clause B, C, D, E, F of section 1 subsection 4 of the Companies Act 2013. उस केस में भी it's your duty to file the NFRA 2 forms. And then next, any body corporate or company or a person or any class of body corporate or companies or person on a reference made to the NFRA by the central government in public interest. कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेफर कर देती है NFRA को कि दैट यू हैव टू चेक for these person or these companies or the corporate or group of companies, then also NFRA can notify yes, you have to file the annual return in accordance there in NFRA form 2. And then next is body corporate incorporated or registered outside India. अगर कोई रजिस्टर्ड ही है बॉडी कॉर्पोरेट या कोई उसमें आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच इज सब्सिडी or associate company of any company or body corporate incorporated or registered in India as per clause A to D जो पीछे हमने डिस्कस किया था, and
if the income or net worth of such subsidiary or associate company exceeds 20% of the consolidated income or consolidated net worth of such company or the body corporate, as case may be referred to in clause A to clause D. So in these case, then also auditor of these companies or the body corporate have to file the NFRA 2 form annual return on 30th November. So this is the summarize कि किन किन कंपनीज के ऊपर नफरा रूल 3 एप्लीकेबल्स हैं, मींस द ऑडिटर ऑफ दीज कंपनी हैज टू फाइल एनुअल रिटर्न एज पर नफरा रूल 5 ऑफ द नफरा रूल्स 2018। तो इसमें पीछे हमने जो डिस्कस किया था, लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज आइदर इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देन unlisted public company, again I am saying public company, paid up capital more than this one equal to or more than 500 crore, annual turnover 1000 more than and equal to 1000 crore, outstanding loan, debenture and deposit together aggregate more than and equal to 500 crore as on 31st March of the immediately preceding financial year. Then also you have to file. Then body corporate incorporated are registered outside, which is a subsidiary or an associate company, or body corporate incorporated are registered in India। और उसके बाद जो इनकम वाला क्लोज जो हमने इनकम नेटवर्क का क्लोज मोर देन आर इक्वल टू 20% है, दैट्स आल्सो। एंड देन अदर कैटेगरीज में कौन सी है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कोई है तो देन कंपनी गवर्न अंडर एनी स्पेशल एक्ट, and then company or body corporate or person referred by the central government to the NFRA. So this is the rule. If you are the auditor of any of these companies, body corporates, then you have to file NFRA 2 form। and then this अगर इसको हम combined देखें रूल 3 and रूल 5, every auditor referred to in rule 3 shall file a return with the NFRA on or before the 30th November every year in NFRA form 2। now another rule is 13 कि अगर आप compliance नहीं करते, अगर आप नॉन फाइलर है, अगर आप नहीं फाइल करते NFRA 2 फॉर्म, then punishment is there, punishment in case of non-compliance। So rule 13 talks about whoever contravenes any of the provision of these rules shall be punishable with fine not exceeding 5000 rupees, and where the contravention is a continuous one, with a further fine not exceeding 500 rupees for every day after the first during which the contravention continues। तो 5000 मैक्सिमम आपके ऊपर फाइन है, एंड अगर आपका ये कंटिन्यू है कॉन्ट्रवेंशन, देन 500 रुपीज पर डे। So this is regarding the penal provision for non-filing of NFRA Form 2। Now one question जो मेरे पास काफी आए थे कि whether this is also applicable on private limited company। NFRA जो NFRA 2 फॉर्म फाइल करना है, तो जो NFRA का स्कोप है whether it's also applicable on the private company, जो पीछे हमने रूल 3 डिस्कस किया। so जो पीछे हमने रूल्स 3 डिस्कस किया, तो yes it's also covered on the private companies that it's under the NFRA jurisdiction। सो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वैसे तो इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी वेरी लेस चांस आर देयर कि इट्स इनटू द प्राइवेट कंपनी, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स द पब्लिक कंपनीज आर देयर। सो बट अगर इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी इज द प्राइवेट कंपनी, देन यस ऑफ कोर्स इट्स कवर्ड। देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आर द सप्लाई कंपनी, देन आल्सो कवर। कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, देन आल्सो कवर्ड। या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रेफर करा है नफरा में, देन आल्सो कवर्ड। तो नीचे मैंने मेंशन भी किया है कि इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी आर वेरी लेस इन नंबर ऑफ, बट यस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में इट कैन बी एप्लीकेबल कि प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सप्लाई कंपनी दैट दे हैव नॉट कमेंस्ड इन ऑपरेशन कैपिटल प्लान एक्सेट्रा, तो उन केसेस में इट्स आल्सो एप्लीकेबल। तो यस रिमेंबर दैट, ये नहीं सीधा आप डायरेक्टली कह सकते कि प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, दे आर नफरा फॉर्म टू, नो, यस इट्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ नफरा। एंड 22 you have to file if you are into the category of rule 3। अगर कोई आपने साइन किया है जो पहले कंपनीज मेंशन है, अगर आपने कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है, देन यू हैव टू फाइल द NFRA 2 फॉर्म एंड द लास्ट डेट इज 30th November 2022। एंड अगर नहीं फाइल करते तो रूल 13 में आपका पेनल्टी क्लोज, पेनल प्रोविजन इज देयर। एंड आल्सो अभी पीछे जो हमने डिस्कस भी किया था, दे हैव NFRA हैव पब्लिश्ड द लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स 1819 1920 की, दे हैव पब्लिश्ड द लिस्ट
वहाँ पे पूरे नेम्स मेंशन है उनके, लास्ट वीडियो आप सीए संसार से चेक कर सकते हो, उसमें पूरी डिटेल मेंशन है। एंड दे हैव आल्सो सेड कि 2021 की डिटेल्स अंडर स्क्रूटनी है, विल पब्लिश वेरी वेरी सून। एंड आल्सो रिक्वेस्टेड कि आप 21 22 की जो भी आपकी है, यू कैन फाइल इट। So this is regarding the NFRA 2 applicability, and regarding the how to file online, कैसे फाइल करना है, it's mentioned on the NFRA website. NFRA website पे आप लॉगिन करके अपने DSC के थ्रू you can file the NFRA 2 forms। उसके ऊपर भी I will try कि if I got the chance, अगर मेरे को टाइम मिला तो I will also plan कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं कि कैसे फाइल करना है NFRA 2। So this is regarding the applicability of NFRA 2 forms. Yes, Nandita ji, if you have any query, yes, something else you want to say, so now it's over to you. No, sir. Thank you so much to be here today. Such a wonderful presentation. And a special thanks to all the users. And I request you all to please like the video and share it with your maximum friends so that they will also get the benefit of our videos and webinars. Thank you so much. Thank you very much.